Okay, very good. Once again, good morning to one and all. Now, today we are reading chapter number 5 of your second book. The title of this chapter is Tansen. So, before reading the paragraphs, we have to read the description which has given in uh, three bullets. So, the first one, the boy has read now. Tansin was the only child of his parents. So, we understand that he was the only one child of his parents, single child of his parents. He had no brothers and sisters. Second, naughty but talented, he imitates the calls of birds and animals perfectly. Tansin was naughty, mischievous child he was, but he was very talented. With it, he was very talented. He imitates the calls of birds and animals perfectly. Tansen, who imitate? Tansen imitate the calls of birds and animals perfectly. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. Once Tansen, once Tansen tried to frightened का मतलब होता है डराना. तो एक बार तानसेन जो है tried to frighten a group of traveler by roaring like a tiger. तानसेन ने एक बार क्या किया कि एक ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स को डराने की कोशिश की. किस तरह से? रोरिंग, गर्जना करके, लाइक अ टाइगर. सो नाउ कम टू paragraphs. I am reading for you. Listen. It's model reading and you all have to listen it carefully. First paragraph. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. A singer called Mukandan Mishra and his wife lived in Behar near Gwalior. Tansen was their only child. It is said that he was a naughty child. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. So, my dear students, now see the meaning, the difficult words which have come in this paragraph. So, difficult word, I think that in the first Mukandan is the name of Tansen father. Mukandan Mishra is the name of Tansen father. Is there any word which you feel difficult to understand? Naughty, naughty means mischievous. Naughty, Naughty, that is the meaning of this word is mischievous. And imitate, second last line में ये word दिया है, that is imitate. Imitate means copy. किसी के आवाज की कॉपी करना, किसी के बात का नकल करना, we call it imitate. So now see the explanation of first two paragraphs. पहली लाइन में लिखा है, यू हैव यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड. मीन्स ग्रेटेस्ट, जितने भी म्यूजिशियन हमारे कंट्री में अब तक हुए हैं, तानसेन वाज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन. तानसेन वाज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ ऑल. उनमें, उन सब में तानसेन सबसे बड़े म्यूजिशियन हुए हैं. A singer called Mukandan Mishra and his wife lived in Bihar near Gwalior. Gwalior is a big city in Madhya Pradesh state. So near to that city there was a small town name of Bihar. The town name is Bihar, and there Mukandan Mishra and his wife lived. He was also a singer. Mukandan Mishra was also a singer, and Tansen was his only son. Tansen was his only son. So the name of that village is Bihar. The name of city where the village situated, Gwalior, and the name of state, Madhya Pradesh. And who was the father of Tansen? Mukandan Mishra, and he was also a musician. Come to next line. Tansen was their only child. It is said that he was a naughty child. ऐसा कहा जाता है. It is said that ऐसा कहा जाता है कि in his early childhood, Tansen was very naughty. He was mischievous.
ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। अक्सर वो जंगल में, फॉरेस्ट में, उस समय गांव के अगल बगल बहुत जंगल हुआ करते थे, तो जंगल में वो खेलने के लिए चले जाते थे। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और जल्द ही जब खेलने वो चले जाते थे तो जल्द ही क्या हुआ, वो कॉपी करना, बर्ड्स और एनिमल्स के वॉइस को, आवाज को बिल्कुल कॉपी करना सीख गए। कैसे उनकी आवाज की नकल की जा सकती है, कैसे उनकी आवाज की कॉपी की जा सकती है। नाउ कम टू पेज नंबर 16. Okay, now see, I'm reading for you. Listen. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them. Strangers in the forest, he said to himself. It will be fun to frighten them. He hid behind a tree and roared like a tiger. The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let us look for this one. Suddenly, one of his men saw a small boy hidden behind a tree. There are no tigers here, master, he said. Only this naughty boy. There are no tigers here, master, he said. It is only a little boy. So, see what happened here. क्या हुआ उनकी लाइफ में, क्या घटना घटित हुई, टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पेज नंबर 16, फर्स्ट पैराग्राफ आई एम रीडिंग। अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास was once traveling through the forest with his disciple. जिस जंगल के नजदीक उनका गांव था, तानसेन का, उसी जंगल से एक बार स्वामी हरिदास was also a very famous singer at that time. He was very, you know, renowned singer, so famous singer. Swami Haridas was traveling through that forest where the village of Tansen situated. जहाँ बिहार ग्वालियर के नजदीक जो उनका गांव था, उस गांव के नजदीक जो जंगल था, उसी जंगल से स्वामी हरिदास with his disciples, disciples means होता है शिष्य, जो उनके शिष्य थे, जो उनके मतलब डिसाइपल्स थे, चेले थे, उनके साथ वो गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे। टायर्ड, टायर्ड की मीनिंग होती है थकना, थक गए थे। The group settled down to rest in a shady grove. Due to tiredness, the group decided to settle down to rest in a shady grove. Grove is a kind of plant. तो उस ग्रुप ने डिसाइड किया कि थक गए हैं, इसलिए ग्रो प्लांट की छाया में थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, आराम कर लिया जाए। और जब वो लोग बैठ करके आराम करने लगे तो तानसेन ने उनको देखा। तानसेन saw them. What happened? Strangers in the forest? Mark of exclamation has given. Means Tansen was surprised to see that strangers in the forest, in my village forest, strangers have come. He said to himself. अपने आप से उन्होंने कहा, एंड इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। और अपने आप सोचा भी कि बड़ा मजा आएगा, इट विल बी फन, बड़ा मजा आएगा, बहुत ही आनंद होगा यदि इन स्ट्रेंजर्स को डराया जाए, इन स्ट्रेंजर्स को धमकाया जाए, डराया जाए। क्योंकि जो उनकी रोरिंग कैपेसिटी थी लॉयन की तरह या एलिफेंट की तरह, तो इससे उनके गांव वाले परिचित थे, तो गांव वाले तो डरते नहीं, इसलिए वो स्ट्रेंजर्स को देख के खुश हुए कि उनको डराया जा सकता है, स्ट्रेंजर्स को डराया जा सकता है। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोर्ड लाइक अ टाइगर। हिड जो है वो हाइड का सेकेंड फॉर्म है, हाइड, HIDE, हिड। हिड का मतलब आप जो है पास्ट टेंस में स्टोरी लिखी जा रही है, तो वो छुप गए, हिड का मतलब छुपना। ही हिड बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे छुप गए। एंड रोर्ड लाइक अ टाइगर, रोर्ड मीन्स टाइगर की तरह वो
चिल्ला करके आवाज निकालने लगे, रोरिंग करने लगे। रोरिंग टाइगर की आवाज को बोलते हैं। सो ही रोर्ड लाइक अ टाइगर। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर। जो ट्रेवलर्स का छोटा सा ग्रुप था वो डर के मारे इधर उधर बिखरने लगा, इधर उधर छुपने लगा। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। लेकिन स्वामी हरिदास ने उन सबको बुलाया और बुला के क्या कहा? डोंट बी अफ्रेड। डरो नहीं। डोंट बी अफ्रेड। Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let us look for this one. सारे टाइगर खतरनाक नहीं होते हैं, डेंजरस नहीं होते हैं. No, all the tigers are dangerous. Don't fear. Now see what kind of tiger this one is. Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree. अचानक से उन शिष्यों में से एक शिष्य ने देखा कि एक छोटा लड़का पेड़ के पीछे छुपा है और वही लड़का ये सब आवाज निकाल रहा है. There are no tigers here, master. He said to Swami Haridas. He said to his guru. He said to his master, sir, there are no tigers. Only this naughty boy. This all roaring sound created by this naughty boy. No tigers here, sir. स्वामी हरिदास से उस शिष्य ने बताया. So this was the first part of this story. Okay, I think that you understand it. Now see the meaning and difficult word. If you feel any kind of difficulty regarding these paragraphs in the first part of this story, please ask.